So we'll all be on page number 108. Let's talk about the positioning of gynoecium, especially gynoecium because that will help us in remembering the floral formula. Yesterday we talked about zygomorphic and actinomorphic symbol, right? If I'm saying a circle with a plus sign, that says it's an actinomorphic flower. Whereas if there is a percentage sign, this says it is a zygomorphic. So what does actinomorphic says? That if you divide a flower from any direction, the flower would be round, but if you divide it from any direction, but the partition which you are using, the division, it should pass through the radius, then you can give you can actually receive two different equal size or symmetrical two sets. Whereas in zygomorphic, I showed you that pea flower, it has a particular line from where you can divide and you get only two equal parts, right? When you divide, only one line can be used for division. So that was zygomorphic. So don't forget to remember this sign. That will be there when you end this chapter. I have one more video that's talking about the flower. So let's watch that first before I continue with the arrangement, insertion of floral whorls. I want you to have a look at this flower. This is the flower of the Tura. Okay, so if you just look at it, this end green part, it is a sepal. यहाँ पे सेपल कैसा है, सेपरेटेड है या एक साथ combined है? You can identify it. We'll just check it. This is the main question, okay? Just identify. और आप एक और चीज़ देखो इस डायग्राम में, ये है हमारा पेटल, ओके? क्या इसमें आपको सेपरेट पेटल दिख रहे हैं या एक साथ? It's like you are getting one full section or it's separate. Like if you just see rose में कैसे आपको एक एक petal आप निकाल सकते हो, but यहाँ पे just observe all these things in this flower and let's see this flower's parts. 4 parts in a flower. They are calyx, corolla, androecium, and gynoecium. These 4 parts are arranged on the thalamus in whorls. This is calyx, the first and outer whorl of the flower. You can see in this calyx सिर्फ टिप में डिवीजन है, राइट? सिर्फ यहाँ पे उनमें डिवीजन है, बट एक्चुअल में पूरा calyx it's a proper fused section, right? So this once open, it looks like this. So this type of calyx is been termed as gamosepalous. It's sepal, no? So it is gamosepalous. और अगर वो अलग अलग होता तो हम उसे बोलते हैं polysepalous. We have these words, we are going to learn those words, but अभी आपको I'm just making it visualize because I like this video very much. I wanted you to see this. This is corolla, second whorl of the flower. Petal, okay? The first whorl was calyx, second whorl, see, this also is not separated. You can see this flower, corolla part. Is it separated? No, it's a single sheath. It is not separate. It is a single sheet. So this corolla
not separated, you call that as gamopetalous. What do you call it? It is petal, no? So it is gamopetalous. जो sepals देखे थे वो भी separated नहीं था, तो हमने बोला था gamocephalous. Sepals थे इसीलिए, right? This you remember. Hibiscus देखोगे, so that's the petals are separate. Hibiscus मतलब आपका China rose, or you call that as is there any Marathi name? Jaswant, right? Jaswant is the Marathi word used. उसमें कैसे है corolla? It is separated. You can easily separate leaf, separate. You can, sorry, not leaf, the petal separate. So they are polypetalous. Even in rose, you can see rose के भी आप निकाल सकते हो एक एक individual पत्ते. Is androecium, third whole of the flower, and this is gynoecium, fourth whole of the flower. This is dissected datura flower. Here we can observe all parts of a flower: pedicel, thalamus, calyx, corolla. So अपने दिमाग में ये दोनों तो डाल लो सबसे पहले. You remember, let me just take it, these two last labeling, pedicel and thalamus. मतलब जो stalk और उस stalk के ऊपर के section को बोलते हैं thalamus. This is pedicel and this is thalamus. Now I'll tell you why I asked you to learn this. Pedicel is clear, thalamus is clear to my class, right? Androecium and gynoecium. Okay, let's see. This is calyx, first whole of the flower, green in color. It has 5 sepals. Gives protection to the inner parts. This is corolla, second whole of the flower, white in color. It has 5 petals. Petals attract insects for cross-pollination. This is androecium, third whole of the flower. It has 5 stamens. Each stamen has a long filament and a sac-like structure, anther. Anther produces pollen grains. Pollen grains are the male gametes. Hence, androecium is the male reproductive part of the flower. Here we are observing anther under a microscope. Several thousands of pollen grains are present on anther. Take some pollen grains on a glass slide for observing under a microscope. These are pollen grains, male gametes of the plant. This is gynoecium and also called as pistil or carpel, fourth whole of the flower. It is single. It has 3 parts: ovary, style and stigma. Ovary produces ova. Ova are the female gametes. Hence, gynoecium is the female reproductive part of the flower. Now we are observing stigma under a microscope. Here we are making longitudinal section of ovary for observing ova under a microscope. अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है.
ध्यान से देखना, जो नीचे का स्टॉक है व्हाट डू यू कॉल इट, पेडिसल, और जो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है जो फ्लावर को होल्ड करता है, दैट पार्ट इज थैलेमस. ओके, व्हाट डू यू कॉल इट, थैलेमस. थैलेमस कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप, यू शेप भी होता है, डिप्रेस्ड होता है, और मे बी इट कैन एनरो, यू नो, इट कैन एक्चुअली हैव ओवरी इनसाइड इट. यहाँ पे कैसे देखो थैलेमस, if you just see the thalamus, the positioning of thalamus, this region, it is allowing the sepal, petal, your androecium, and this is the gynoecium जिसका नीचे वाला हिस्सा ओवरी का पार्ट है. So this is the arrangement. So हमने देखा ये चारों worlds arranged हैं. So now we go to the textbook and we'll understand the insertion of the floral wall on the thalamus. So remember pedicel के ऊपर की region को बोलते हैं thalamus. अब thalamus के ऊपर कैसे arranged हैं ये चारों whorls. चारों whorls means your calyx, corolla, androecium and gynoecium. So basically कैसे हम लोग focus करेंगे ovary के positioning में. यहाँ पे ovary is equally positioned, right, with all the other four whorls. But now we go to the chapter. See this, the first condition. यहाँ पे आपने देखा थैलेमस के ये जो थिक पोर्शन है दैट्स द थैलेमस. सो थैलेमस के ऊपर सेपल पहले अरेंज्ड है, फिर पेटल है, फिर एंड्रोशियम है, फिर गायनेशियम है. सो गायनोशियम की पोजीशनिंग सबसे ऊपर है. गायनेशियम की पोजीशनिंग इन बाकी के तीन वर्ल्ड 1 2 3 तीन वर्ल्ड के भी पोजीशन से ऊपर है, राइट, इट्स अबाव. सो दैट्स दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोगाइनी, जिसमें ओवरी इज सुपीरियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई ओवरी इज सुपीरियर? बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशनिंग. इट इज हाईली प्लेस्ड अबाउ अदर 3 वर्ल्ड्स, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जी के नीचे अंडरलाइन करेंगे. जी मीन्स गायनेशियम, राइट. सो गायनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो फ्लावर के 4 वर्ल्ड्स तो आपके क्लियर होंगे, राइट. सो अभी हमने पढ़ा है इंसर्शन ऑफ थैलेमस के ऊपर कैसे अरेंज्ड है. कई बारी थैलेमस यू शेप्ड होता है, ओके. तब क्या होता है, ओवरी इज प्लेस्ड इन द बॉटम रीजन और बाकी के 3 वर्ल्स सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, उनकी पोजीशनिंग देखो और ओवरी की पोजीशनिंग देखो. यू कैन मेक आउट राइट फ्रॉम द डायग्राम. ओवरी इज डाउन कंपेयर टू द अदर 3 वर्ल्ड. पोजीशनिंग कैसा है, इट इज, सी द सेकेंड कंडीशन. दिस इज ऑल्सो अनदर कंडीशन. इसमें भी इट इज़ नॉट दैट डीप, बट इसमें भी बाकी 3 वर्ल्ड के कंपैरिजन में ओवरी का पोजीशन नीचे है. सो दिस गिव्स अस अ वेरी डिफिकल्ट और सॉरी अ डिफरेंट कंडीशन, पेरीगाइनस, वेरिन इट इज़ कॉल्ड एज सेमी सुपीरियर. पहले वाला कैसा था, ऊपर था, तो हमने उसे बोला सुपीरियर. सो अभी कैसा है गायनेशियम का पोजीशनिंग, सेमी सुपीरियर. सो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जी विथ अ डैश इन फ्रंट. सो दैट कैन बी पेरीगाइनस. ओके, दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट. ओके, सो हाइपोगाइनी क्लियर हो गया. हाइपो में ओवरी की पोजीशन बाकी वर्ल्ड से ऊपर है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सुपीरियर ओवरी, जी के ऊपर लाइन डालेंगे. देन पेरीगाइनी में 2 कंडीशन है, जिसमें ओवरी का पोजीशनिंग बाकी वर्ल्ड से नीचे ही है. 2 कंडीशंस आर देयर, क्वाइट सेम बट नॉट इक्वली पोजिशनड. सो दिस इज ऑल्सो सुपीरियर. पेरीगाइनी मतलब सेमी सुपीरियर बोलेंगे.
ठीक है. अब एक तीसरा जो कंडीशन है, यू कॉल दैट इज एपिगाइनस. तो इसमें क्या होता है, थैलेमस के अंदर ही ओवरी होता है. सो बाकी वर्ल्ड सब ऊपर होते हैं, बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में, पोजिशनिंग के कंपैरिजन में. तो यहाँ पे ओवरी को हम बोलेंगे इन्फीरियर. सो इसका पोजिशन, इसको कैसे डिनोट करेंगे, वी डोंट राइट इट, देयर इज अ करेक्शन, मेक द करेक्शन इन योर टेक्स्ट बुक. यू राइट इन्फीरियर. I'm sorry. What did I do? This is an error. No, this one is correct over here. यहाँ पे लिखा है G. Let me just correct it. For hypogyny, that was wrong, what I said. Okay. So let's make this correction. This is correct for hypogyny. Superior ovary, superior. Okay. Then perigyny में you can just write G and a dash, wherein it is semi-inferior or semi-superior. You can use any word. Epigyny जब thalamus उसको enclose कर रहा है, okay, this last one, thalamus is enclosing, then at that time you're not going to denote it. There is a correction here. This is wrong. Epigynous, it will be G. On top there would be a line. Okay, confusion, let's clear the confusion once again. Superior में कैसे होगा, let's change the color. Superior का कैसे होगा positioning, G with line down. Semi superior, half superior, perigynous में कैसे होगा, G with a small dash in front. Then epigyny में कैसा होगा, G with a line on top. Right? I hope I've made myself very clear. Starting में I said it wrong. Hypo में I said G का positioning. So this is wrong. Please make the correction in your textbook. Epigyny का positioning उन्होंने जो denotion दे रखा है epigyny में. So ovary is inferiorly placed. So we have the inferior ovary. See the next topic here. Floral parts. ये सारे it's very easy for you to understand. Calyx, corolla, and this I've explained in that figure. Polysepalous मतलब अलग अलग है, और अगर एक साथ जुड़े हुए हैं गैमोसेपलस होते हैं. धतूरा के अंदर आपने देखा करोला, करोला भी रोज़ में कैसा है, पॉलीपेटलस, अलग अलग है, पेटल अलग है, हम लोग अलग कर सकते हैं, राइट. लेकिन यू हैव सीन इन धतूरा द पेटल्स आर, यू नो, they were 5 petals, लेकिन एक साथ जुड़े हुए थे, they were not separate. Then perianth is a word used when the calyx and corolla, you cannot differentiate, सब fused होता है. We have a picture, I'll just arrange a picture for you. So next topic is estivation. कैसे sepals को arrange, sepals and petal को कैसे arrange किया गया है on the flower or on the thalamus region. So this part we'll understand tomorrow. You call this as estivation. So tomorrow we continue with estivation.